अगर अभी तक यही सोच रहे हो कि एआई क्या ही कर लेगा, हमारी नौकरी नहीं जाने वाली, तो वॉच दिस। Adobe is using the power of generative AI to deliver the most advanced and precise editing tools ever in Premiere Pro. Let's take a look at some features coming soon powered by our new Adobe Firefly video model that'll transform how editors work. One common editing challenge is finding something in a shot you need to add or replace. The Object Addition feature in Premiere Pro, combined with Adobe's Firefly video model, lets you add or change objects and footage with a text prompt. Make a selection, write a prompt, and add anything you can imagine. These diamonds were created by the Firefly video model currently in development. And not only can you add objects, but you can easily remove them too. Object removal with AI-based smart masking makes selecting and removing objects across frames quick and precise. Here, this distracting utility box is removed with Firefly. Remove unwanted props, crew or gear, or copyrighted elements like brand logos. And with Premiere Pro, all your edits are non-destructive, so you can always get back to your original footage. When your clip is too short and you want to hold on a shot or a character for an extra beat, Generative Extend intelligently adds frames with Firefly, extending your footage, so you have the exact media you need. Like here, where we extend this shot of the woman a few frames. As we continue to innovate, we're committed to transparency through the use of content credentials. Now coming to Premiere Pro, so you always know whether AI was used in the creation of the media you're viewing. We can't wait to bring these Firefly-powered video editing workflows to Premiere Pro later this year. And there's more. We're excited to share our explorations around giving editors the choice to use models that work best with their footage. Here are some early examples of how third-party generative AI models could look within Premiere Pro, like Pika, powering Generative Extend to make a scene flow better. From OpenAI, here's an example of their Sora model, currently in early research, generating B-roll for any scene. Through simple text prompts, Sora creates variations for you to choose from. Here's the same use case now using Runway AI's video model, generating a new video clip and adding it to the timeline in a snap. And content credentials coming to Premiere Pro this year will always make transparent whether AI was used and what model was used in the creation of media. To recap, revolutionary features like Object Add, Remove, and Generative Extend, powered by the new Adobe Firefly video model, are coming to Premiere Pro. And we're excited to show early research explorations with our friends at OpenAI, Runway, and Pika, so editors have the freedom to use the best model for their project. It's Adobe Premiere Pro, supercharged by AI. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आई बिलीव ये आने वाले टाइम 1 या 2 साल में ही बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। आपको भले ही अब ये छोटी लगे, लेकिन किसी लिमिटेड बजट या यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग इज कि इन्होंने थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि पीका, रनवे और ओपनएआई के सोरा मॉडल को ऑन बोर्ड कर लिया है, जिससे प्रीमियर प्रो की ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाएगी। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। बात तो सही है। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स दे शोड। पहला है ऐड ऑब्जेक्ट। सिंपल शूट करने के बाद अगर कोई चीज रह जाए या मिसिंग लगे तो सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं मास्किंग करके, जैसे कि डेमो में दिखाया है। टाई चाहिए, ऐड कर दो। वॉच दूसरी चाहिए, बदल दो। वैसे इस एग्जांपल की बात करूँ तो इसे देखते ही पता लग जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि ये स्टिल इमेज ज्यादा लग रही है। सो 1 या 2 सेकंड की बात है तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो ये व्यूअर्स का एक्सपीरियंस जरूर खराब करेगा, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी आउट ऑफ द प्लेस लग रही है। इसका सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अलग है। नेक्स्ट इज रिमूव ऑब्जेक्ट। इस फुटेज में तो ये इजीली हो गया, बट ऐसे शॉट्स जहां 2-4 चीजें एक दूसरे से ब्लेंड हो, वहां कितना अच्छा वर्क करेगा ये देखना है। वैसे इसकी रिलीज डेट नहीं अनाउंस की है, तो साल के आखिरी में आए या अगले साल, तब तक काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी इसमें, एक बेट। सो रिमूव ऑब्जेक्ट भी यूजफुल होगा, बट व्हाट इज दिस जेनरेटिव फिल? ऑनेस्टली आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। बट सोरा का जो रिजल्ट था सबसे बढ़िया वो लगा। पूरा एक नया सीन ही जनरेट किया जो लगभग उसी सीन के कलर और टोन से मैच करता है। कलर टोन से याद आया कि अगर मुझे एक सीन चाहिए जो पिछले सीन से ही मिलता जुलता है, उसके कलर टोन को मैच करे, तो ये उसे जनरेट कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ रनवे वाले में तो फील पूरी ही डिफरेंट आ रही है। एंड लुक एट द डैशबोर्ड, साफ एआई जनरेटेड लग रहा है। बट रुको जरा, सबर करो।
चैट जीपीटी की तरह इसे 1 या 2 साल दो एंड हम सब कहेंगे वो भी क्या दिन थे, ऑथेंटिसिटी, रियलिटी, क्या ये तो अभी भी नहीं है लोगों में, फॉरगेट अबाउट इट। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, लेट मी नो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो तब तक के लिए सी यू लेटर एलिगेटर।